I think after this, yeah. Yeah, this is in fact, we are thankful to you. You have accepted our invitation of this webinar on vocational education. Yeah, thank you so much. So So actually, after this, we can really work on how to implement vocational education, and we have to wait also for some time because now things are changing as per the NCFSC, and being part of the curricular area group for vocational education, I'm the member convener for that. So we can also design curriculum as per the requirements of the tribal students. Once things are clear, how the syllabi and this textbooks or workbooks would have to be developed. So we have to do it by February, everything. So once we have done that, we'll customize it according to the requirements of EMRS. We should start in 1 or 2 minutes because सभी लोग जुड़ रहे होंगे. Vacant number. I think we should start now. A very warm good evening to all of you who are connected to virtual mode for the 8th webinar on NEP 2020. This webinar is based on vocational education, and this would be conducted by Dr. Vinay Swarup Mehrotra. Dr. Vinay Swarup Mehrotra holds the esteemed position of professor and head of the Curriculum Development and Evaluation Center at PSS Central Institute of Vocational Education, a vital constituent unit of National Council of Educational Research and Training, that is NCRT, at Bhopal. With a distinguished career, Dr. Mehrotra has actively contributed to the advancement of vocational education in India. His notable involvement encompasses development of policies, schemes, and guidelines for the vocationalization of school education, a crucial initiative under Samardh Shiksha Abhiyan. Dr. Mehrotra's expertise extends to crafting framework that shape the educational landscape, including the National Skills Qualification Framework, National Curriculum Framework for School Education, and National Higher Education Qualification Framework. Dr. Mehrotra's influence in vocational education extends beyond India, as he has represented the nation in various international forums. His participation in conferences, workshops, and seminars worldwide underscores his commitment to advancing vocational education and training on a global scale. As the head of a center pivotal to curriculum development and evaluation, Dr. Vinay Swarup Mehrotra plays a crucial role in shaping educational policies, frameworks, and initiatives, contributing significantly to the enhancement of vocational education in the country. Sir, I, on behalf of the NEST and the all EMRS fraternity, welcome you to this session on vocational education. Over to you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you very much for that introduction. And thank you also for this opportunity to interact with the faculty and the principals, obviously, head of the institutions of Eklavya Model Residential Schools, which are doing a wonderful work in the field of imparting education to the tribal students. So
To begin with, the topic which has been assigned to me is the vocational education, which is very close to my heart because I have spent almost 28 years now in the same field, fighting for the rights of the students in terms of uh, getting those skills, which includes living skills, life skills, vocational skills, employability skills, 21st century skills, and so on. Uh, as we have fought for the SC, STs, OBC, for their rights, social rights, economic rights, we have to also fight for them in terms of their educational rights. And vocational education is one dimension of education which is very important in that sense that it helps a student to acquire those skills, livelihood skills, survival skills in the society, and therefore it has its own importance. And we have to emphasize this in our schools as we have done in the vocational training centers established by the Ministry of Tribal Affairs along with the state governments. So the topic which I'm going to deal with is vocational education. And to begin with, first of all, I'll be talking about what has been the evolution of vocational education, not just the history of it, but how it has evolved since 1950, that is after the independence. What changes has taken place? Very briefly, I'll be talking about on those aspects, and then we'll move forward towards what should be the role of the principals, teachers. I'll also be some of the videos which will help you in getting convinced about the importance of vocational education and what needs to be done in terms of the effective implementation of vocational education. So to begin with the presentation, as I mentioned, that we'll be talking about evolution of vocational education. Now you can see in the first slide what I have shown is the evolution, how it evolved over the years since 1950, where we have had craftsman training scheme, CTS, which is still there in the ITIs, industrial training units or institutes that you are aware of. So this CTS scheme actually prepares skilled workers in different trades for the industry. And during these years, if you have noticed that ITIs have been able to shift from engineering to non-engineering trades also. So they are not just implementing the engineering trades, which they used to do it earlier, but they have also introduced trades like beauty and wellness, tailoring or fashion designing, printing and all those things that they are now implementing. So what is happening is that they have realized over the years that we have to also enter into the service sector. Service sector, as you know, it's a huge sector now. Uh, and the growth is also very fast in service sector. So from agriculture to manufacturing to service sector, I mean, these three sectors, which are the major part of the economy, we have to really look from this perspective that how we incorporate changes in the development of the skilled manpower so that we meet the current as well as the future requirements of the workforce. So this is very important aspect when we talk about vocational education or skilling people or skill development. So one of the very important aspect that you have to always keep in mind is that whatever training that we are doing in our institution should impart skills which are required by the industry or the world of work,
for the current as well as the future workforce. So we should not just restrict ourselves to the current workforce, but also think what is going to the future industry. What are the kind of jobs that are going to be in the future? Say, for example, now we talk a lot about artificial intelligence, machine learning, coding, programming, AR, VR technologies, cybersecurity. Now, these are the jobs, I mean, in these domains, there are a lot of jobs which are going to emerge in the future. So, mobile, automotive, IoT refrigerators. So, we have to think of skilling our children for the future jobs also. So, this is where the CTS or the Craftsman Training Scheme has evolved over the years, and they are also now targeting these future skills. Now, in 64, 66, this Kothari Commission report came and it talked about 10 plus 2 pattern. Now, the national education policy has changed this pattern to 5 plus 3 plus 3 plus 4, which I'll be talking about later on. But the Kothari Commission was the first commission which emphasized the importance of work experience and diversification of students into academic and vocational streams at the plus 2 level. Thereafter, in 1986, the National Education Policy on Education talked about a distinct stream of vocational education intended to prepare students for identified occupations. Then came the centrally sponsored scheme of vocationalization of secondary education. Now, before that, in 1976 and to 78, I would say that NCRT really worked on this program of work experience. They came out with the guidelines, they conducted workshop, and all those things happened. And this, when this centrally sponsored scheme of vocationalization of secondary education came, it provided guidelines and also the structure for streamlining the implementation of the vocationalization of secondary education in our nation or India. So it provided the diversification of educational opportunities to enhance individual employability. So this scheme actually helped in streamlining the vocational education program. But there were certain flaws in the scheme. So one of that was that it was terminal in nature. That means students were not studying the general education subjects along with the vocational subjects. So what happened that they were not allowed admission into the higher education like BA, BCom, BSc and all those courses or programs, degree programs. So what happened, the message went into the society that students who are opting for vocational education will not be able to go for higher education. So this actually gave a setback to the effective implementation of the scheme. Students who were coming out from this program, vocational education program at 11th and 12th, grade 11 and 12th, they were also not getting employed, nor they were getting admission into higher education. So this also gave a major setback to the implementation of the scheme. Another factor was that the teachers who were teaching the vocational courses were not trained in the industry. Basically, they were not practitioners. They were from the general education system, and they were not knowing about much about the employability skills, about vocational skills, which are being implemented or required in the industry. So as a result, what happened? The scheme slowly got diminished in terms of the number of students enrolling in that, the pass outs not getting employed, and all those things happened. And as a result, this was finally closed. And in 2012, the revised centrally sponsored scheme of vocationalization of secondary education was introduced, along with the
National Vocational Education Qualifications Framework, which is now known as National Skills Qualifications Framework. So this NVQF, which was launched in 2012, in 40 schools of Haryana, this revised scheme was implemented. With the implementation of the NSQF in 2013, the scheme was again revised and it was implemented in 2014 with the learnings of the pilot project, which was implemented in 40 schools of Haryana. So we had introduced uh, subjects, basically 4 subjects in 4 sectors like automotive, retail, um, this security, and ITS we had implemented. So what happened is that based on the learnings, we revised the scheme and it was again launched in 2014. Now thereafter this Samagra Shiksha came. And in this Samagra Shiksha means holistic education, which came, and then this all the centrally sponsored schemes like Sarv Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, teacher education, vocationalization or secondary education, they got subsumed in Samagra Shiksha. So now we have just one scheme, which is Samagra Shiksha. This Samagra Shiksha version 2 has also been launched, and this is on 1st April 2021, and it will continue up to 31st March 2026. So coming to the Samagra Shiksha, which was introduced in 2018, it subsumes the erstwhile centrally sponsored scheme of Sarv Shiksha Abhiyan and all those things. And now we have version 2.0. Now we have National Education Policy 2020. Now before this, we have had National Skill Development Policy, which is known as National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015. That policy actually gave the direction in terms of skilling, upskilling, and reskilling. And it said that we have to scale the skill development programs with sustainability and speed. So upscaling of the skill development programs were proposed in terms of setting up public-private partnerships. So one of the, you might be all aware that public-private partnership is being implemented in other sectors. Now in education, we have NSDC, National Skill Development Corporation, which was set up in PPP mode to promote skill development in our country. So in NSDC also set up these sector skill councils. There are now 37 sector skill councils, which are industry representatives, and they work on various aspects like labor market information system, doing research in vocational education, collaborating with industries, developing qualification packs, doing training programs for the trainers as well as assessors. They are closely working with vocational training providers. So SSCs are in each of these sectors like agriculture, retail, IT, ITS, beauty and wellness and all. They are closely working with the industries to promote skill development. They are also working with institutions like schools, polytechnics, ITIs, and KVKs, uh, then Pradhan Mantri Kaushal Vikas Kendras, then the Upadhyay Kaushal Vikas Kendras. So they are working very closely with all these institutions to promote skill development. Then came this National Skills Qualifications Framework, which has now 8 levels. Earlier, there were 10 levels when it was launched in 2013. And after 10 years, it has been revised to 8 levels. So earlier there were 10 levels, now we have 8 levels in the NSQF. The National Education Policy talks about reimagining vocational education.
So it says that we have to remove the hard distinction between art, science, and commerce, and between curricular, co-curricular, and extracurricular activities, and between vocational education and general education. So there should not be any boundary between the vocational education and general education. So it has really emphasized on the implementation of vocational education in the mainstream, not as a separate stream. So this is a major shift from the National Education Policy 1986 to 2020. So now what we are talking of is mainstreaming of vocational education, integrating it with general education. Um, there should not be any difference between curricular and co-curricular areas and extracurricular activities. So therefore, we have now the National Credit Framework, which is emphasizing on defining credits for both curricular as well as extracurricular or co-curricular activities. So in future, students who are opting for NCC or on-the-job training, field visits, and all those things that they are doing activities as part of the vocational education, their credits will also be counted. So this is a major shift again from what we have been doing earlier in terms of the creditization or in terms of giving due credits to the academic path, just the academic path, not to the co-curricular activities. So now we'll be in that way, we'll be promoting co-curricular activities also, which will become part of our main education system. So earlier we just used to give certificates and nobody used to count those as or recognize those certificates or competencies that have been acquired by students. So this is a major shift again from what we have been doing earlier to what now we are doing in terms of the integration of curricular and co-curricular areas. There's another development about the National Higher Education Qualification Framework, which came in 2023, in order to streamline the vocational education system in the higher education. Because as you are all aware that we have never given due weightage to vocational education in the higher education. But now this trend has changed. A lot of emphasis is now being given to skill development in the higher education system. We have polytechnics, we have now colleges, universities, which are offering courses like BVOC, Bachelor in Vocations. Now, in Bachelor of Vocation, one can opt for multi-entry and multi-exit. Like one can take certificate in 6 months. In 1 year, they can get diploma. In 2 years, they can get advanced diploma. In 3 years, they get degree in the BVOC program. Similarly, we have now 2 years of MVOC program where one can do masters in vocation. So things are changing pretty fast in vocational education ecosystem. Now coming to Samagra Shiksha, which is, as you are all aware, an integrated scheme for school education, and it has focused on work-based activities. So what we have to emphasize is on the forms of work. Now this has been talked about in the NCFSC, National Curriculum Framework for School Education, where we talk about 3 forms of work in the middle stage. Now, what are these 3 forms of work? The first one is life forms. Second is machine and material. And the third is human services. So what we are saying is that we need to train our children on these forms of work. So life forms include like agriculture, for example, forest-based, products and things like that. Fisheries and all those, animal-based. So those life forms we have to look into. Machine and materials like agriculture machinery, tools, equipment used in manufacturing and construction and things like that. Then we have the human services like healthcare, retail. So we have to uh,
train our children on all these forms of work. Multi-skill activities. So the focus in grades 9, 10th, that is the secondary stage phase 1, the focus is on multi-skill activities where we'll be including the soft skills as well as the vocational skills across sectors, so that students, they acquire broad-based skills, not just very narrow as per the job role, but then these skills will have to be provided in terms of the basic skills related to these forms of work, like life forms, machine and material, and services. So all the schools would introduce vocationalization of education from classes 6 to 8. So what is happening now is that we are mainstreaming the vocational education, and every school will be offering the skill development activities, whether it's form of pre-vocational capacity development or it is in the form of vocational capacity development. So these are the changes which are taking place with the National Education Policy 2020 as well as the National Curriculum Framework for School Education. General education teachers of language, mathematics, science, social science, art, music, and work experience would be involved in the organization of skill-based activities related to the themes that they are teaching. So what has been envisaged is that the general education teachers, those who are teaching math, science, language, art, they will be involved in the conduct of the vocational activities. So for example, if a science teacher is teaching about earthworms, so they will be conducting activities like vermicomposting, where they'll be using these earthworms and doing activities of vermicompost preparation. Like we can do it at home also, using our kitchen waste, using paper waste. We can convert that waste into vermicompost. So what will happen is whatever children would be learning in the school can also do those activities at home. So our home will also become activity oriented learning school, I would say. So children would also learn at home. They will not just learn at school, but they would also be doing those activities at home, learning so much of skills, you know. So this is what has been the aim of the changes that are taking place in the education system. Now, coming to the National Education Policy 2020, you are already aware of this, that a committee for the draft National Education Policy was constituted under the chairmanship of eminent scientist Dr. K. Kasturi Ranganji. And on 31st May 2019, the draft NEP came. And the NEP 2020 was approved by the Union Cabinet on 29th July 2020 to bring about transformational reforms in school and higher education system in the country. So now it replaces the 34-year-old National Policy on Education, 1986. So coming to the integration of vocational education with general education. Now, what are we aiming at in terms of integration of vocational education with general education? So the policy emphasizes that there should not be any hard separation between arts and sciences and between vocational education and academic stream. We have to recognize the unique capabilities of every child or each student who is there in the school. So as you might be knowing that in Mahabharata, what happened? Dronacharya taught Arjun the archery. अर्जुन को क्या उन्होंने किया, अर्जुन को क्या सिखाया, अर्जुन को धनुधारी बनाया, और भीम को क्या किया, भीम को गदाधारी बनाया. ये क्यों डिफरेंस रखा? क्योंकि अर्जुन के पास जो कैपेबिलिटीज थी, जो एबिलिटी थी, वो अलग थी जो भीम के पास थी. और भीम के पास
जो काबिलियत थी, क्योंकि भीम की बॉडी बिल्ड अच्छा था, वो गधा को आसानी से उठा के घुमा सकता था। इस वजह से उसको जो है उन्होंने कहा कि भाई भीम तुम गदाधारी बनोगे, और अर्जुन को कहा कि तुम धनुधारी बनो। हम क्या करते हैं, हम सबको या तो धनुधारी बनाने की कोशिश करते हैं या गदाधारी बनाने की। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी शिक्षा पद्धति है, वो स्ट्रेट जैकेटेड है। हमें उसको बदलना होगा। हमें बच्चों की काबिलियत के हिसाब से उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना होगा। एंड दिस कैन बी इजीली डन थ्रू बाय ट्रेनिंग देम ऑन स्किल, जो कि लिविंग स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, वोकेशनल स्किल्स है, फ्यूचर स्किल्स है, जो हम बातें करते हैं कि ये सारे स्किल्स हमें बच्चों को देने चाहिए। सो what we have to do now, we have to recognize unique capability of every child and then impart training to them so that they can stand on their own feet, they can empower themselves to become entrepreneurs. So हमें पिता विकास के ऊपर भी जोर देना पड़ेगा, जिससे कि हम जॉब क्रिएटर्स बना सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। नौकरी ढूंढने वाले जो है अगर हम ज्यादा पैदा करेंगे तो नौकरी देगा कौन? नौकरी वो देता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है या स्टार्टअप्स खोलता है, तो वो जो है नौकरी देगा। तो उसके लिए भी हमें शिक्षा में अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे कि हम ऐसे बच्चे या यूथ जो है तैयार कर सके जो रिस्क लेने की एबिलिटी रखते हो, जो लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें हो, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 ने फोकस किया किस पे? मल्टी डिसिप्लिनरिटी। सो मल्टी डिसिप्लिनरिटी मीन्स हमें मल्टी डिसिप्लिन जो है कोर्सेज चलाने होंगे, जहाँ पे कई डिसिप्लिन के जो है स्किल्स है, नॉलेज है, और टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो, तभी हम एक बेहतर जो है शिक्षा दे पाएंगे। सो मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस दी साइंसेस, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स। तो हमें इस सारे जो डिसिप्लिन हैं इनका समावेश करना होगा। इनको अगर हम एक साथ लेके अगर चलेंगे तो हम बेहतर एक जो है शिक्षा दे पाएंगे, होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा दे सकें। The policy also emphasized on creativity and critical thinking skills. अब जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमारे बच्चों में ज्यादातर जो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, इनपुट बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे रोट लर्निंग को हम ज्यादा फोकस करते हैं, रटन विद्या, बच्चे रटते हैं और जाके एग्जाम में वॉमिट कराते हैं और मार्क्स पा जाते हैं। बट अगर हम उनको, अगर लैंग्वेज की बात करें फॉर एग्जाम्पल, 99%, 97%, 90% जो बच्चे लेके आए, उनसे अगर कहा जाए कि आप अपनी एक खुद की कविता लिखो, या कोई ऐसे लिखो अपने आप से, या कोई न्यूज राइटिंग करो, या कोई आर्टिकल लिखो, या कोई रिसर्च पेपर लिखो, सो दे आर नॉट एबल टू राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिलेबस के अनुसार उनको पढ़ा तो दिया, रटवा दिया और एग्जाम भी दिलवा दिया, लेकिन उनकी काबिलियत जो है, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेसिटी, वोकेशनल कैपेसिटी, वो हमने डेवलप नहीं की। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रमोट skill development, which and we have to think out of the box. Creativity तभी आती है जब आप, if you think out of the box, if you just think जो जैसा है वैसा ही होगा, तो आप क्रिएटिविटी, जैसे आपने देखा होगा आजकल बच्चे या बहुत से लोग वेस्ट बॉटल्स को यूज करके उसमें पौधे उगा लेते हैं, उसमें बहुत सी चीजें आर्ट मेकिंग करते हैं, उसके बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हम क्यों कराते हैं बच्चों को? जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो। So that is why we have to promote all these things in our schools at an early age. So
NEP 2020 has focused on vocational education to be provided at early age. Synergy in curriculum. Now हमें क्या करना है, हमें जो करिकुलम, जो हमारा सिलेबस है across the classes or grades from 1 to 12, there has to be a synergy. मीन्स जो हम पढ़ा रहे हैं लोअर क्लासेस में, वो एक फाउंडेशन बिल्ड करे और आगे चल के बच्चा उसमें स्पेशलाइज करे। तो इसी तरह हम लोग ने जो वोकेशनल एजुकेशन जो अभी चल रही है, डिजाइन करी है, उसमें आप देखेंगे कि जॉब रोल्स जो है 9th-10th में हमने, अगर हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर की बात करें तो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का जॉब रोल हम चला रहे हैं। 11th-12th हम चला रहे हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट का। तो बच्चे क्या है, शुरू में बेसिक स्किल्स सीखने के बाद वो आगे चल के जो है एडवांस स्किल्स सीखेंगे। इस तरह से हमारी जो है एजुकेशन सिस्टम में हम एक सिनर्जी लेके आए करिकुलम के थ्रू, जिसमें बच्चे को ये समझ में आए कि मैं सिर्फ यहाँ पे नॉलेज एक्वायर करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाइड लर्निंग देने आया हूँ। मतलब जो मैं जान रहा हूँ, whatever I'm learning as part of the knowledge, I'm able to apply that knowledge in the real scenario या रियल वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो हमें क्या करना है, इसी तरह बच्चे को नॉलेज मतलब ज्ञान, कौशल और उसका एटीट्यूड, ये तीनों चीजें डेवलप करें। सो व्हाट वी कॉल एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सो कॉम्पिटेंसी मीन्स नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ये तीनों चीजें, इन तीनों का हमें समावेश करके हमें जो है बच्चे को तैयार करना है। तो सिनर्जी इन करिकुलम जो है हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा। फिर हम आते हैं अब यहाँ पे कि NEP 2020 में और क्या क्या बातें कही है। उसमें कहा है कि वी हैव टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन, वी हैव टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ ग्रेटर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी, detailing of the national skill qualifications framework is to be done. We have to provide vocational exposure at early ages. We have to promote lok vidya, indigenous knowledge and skills. तो हमें क्या करना है, हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, आप देखेंगे जो निटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, ट्राइबल एरियाज में आप देखिए कितनी बढ़िया उनकी आर्ट है, क्राफ्ट भी कितना बढ़िया है, जिस तरह की वो चीजें बनाते हैं, जिस तरह का वो डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे भोपाल में कभी जो आए होंगे यहाँ, अगर शायद उनको मौका मिला होगा, ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं हम लोग उनको लेके जाते हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रिंसिपल्स के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी हम लोग उनको लेके जाते हैं वहाँ ट्राइबल म्यूजियम में। और वो देख के अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट उनको वहाँ देखने को मिलता है और जिस तरह से हुआ है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें वहाँ पे फी भी लगी हुई है, एंट्री फी भी है, फोटोग्राफी के लिए भी फी है। तो इस तरह से वो रिसोर्सेज भी जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पैसा लेके उसको और डेवलप भी कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको स्कूलों में भी आप जो है आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं बच्चों से, मॉडल्स बनवा सकते हैं, प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं जो आप सेल कर सकते हैं, और उससे जो है आप रिसोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रमोट इन ट्राइबल स्कूल्स। EMRS के जो आपके हैं उसमें स्कूलों में जो है आप ये वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू आप प्रोडक्ट्स तैयार करा सकते हैं बच्चों को। उनसे सिर्फ ना स्किल डेवलपमेंट ही नहीं होगा, बल्कि वो प्रोडक्ट्स को सेल करना भी सीखेंगे, मार्केटिंग स्किल्स जो होती है, फिनेंशियल लिटरेसी भी डेवलप होगी उनकी। जो हम लोग कह रहे हैं कि हमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप करना है, उसमें हमें फिनेंशियल लिटरेसी को भी डेवलप करना है। हमें उनकी एबिलिटी टू सेव मनी, टू ओपन अ बैंक अकाउंट, टू ऑपरेट अ बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें जो है हमें उनको सिखानी होगी। तो NEP में जो अब नया करिकुलर स्ट्रक्चर और पेडागोजी जो प्रपोज किया गया है वो है 5+3+3+4। मतलब 4 स्टेजेस उसमें अब बताए गए हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी,
मिडिल एंड सेकेंडरी। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्रिपरेटरी स्टेज में ग्रेड 3 to 5 है, फाउंडेशनल स्टेज में प्री स्कूल टू ग्रेड 2 है, सेकेंडरी स्टेज में ग्रेड 9 to 12 है, और मिडिल स्टेज में 6 to 8 है। तो इस तरह से ये जो है 5+3+3+4 आप देख रहे हैं इसमें ये चेंजेस लाए गए हैं। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 है। जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे स्कूलों में हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे सिस्टमैटिकली देना है वोकेशनल एजुकेशन को, तो वहाँ 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है वोकेशनल ओरिएंटेशन, दूसरा है वोकेशनल अवेयरनेस, तीसरा है वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। Vocational orientation will help students in describing their abilities, motivation, interest and aptitude. तो हमें ओरिएंटेशन जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका मोटिवेशनल एस्पेक्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है उसकी, उसका एप्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें हम एसेस करें। अवेयरनेस में हम क्या करें, हम उसको हेल्प करें टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड परसीव देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड ऑफ। Vocational exploration will help students to identify their place in the world by exploring various vocations or occupations and their importance in becoming productive citizens. तो हम ये 3 चीजें स्कूलों में करें, जैसे कि पहले वोकेशनल ओरिएंटेशन करें, वोकेशनल अवेयरनेस लेके आए अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क, उसमें क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, then vocational exploration, so students will be able to explore various vocations or occupations that are available in the world of work. उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम आते हैं जो एस्पेक्ट्स कहे गए हैं जिसपे एम्फेसिस दिया गया है NEP 2020 में, उस पे हम बात करते हैं। तो पहली चीज कही गई है जो मिडिल स्टेज में जो है हमें लेके आनी है 10 बैकलेस डेज का प्रोग्राम। सारे स्कूलों में हमें ये बैकलेस डेज, जो कि सैटरडे हो सकता है आपका, कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है इसको, कि सैटरडे को जो है वो बच्चों को बैग नहीं लाना है, उनको यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज ही करनी है। और इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को हम एक्सपोज करें अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, जैसे फील्ड विजिट हो गई, या किसी क्राफ्ट पर्सन को आपके स्कूल में बुला लिया और उससे एक्टिविटी, जैसे पॉटरी हो गया, है ना, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन हो गया, नर्सरी सेटअप हो गया। ये सारी एक्टिविटीज आप अपने स्कूल में करा सकते हैं, या बच्चों को आप बाहर ले जाके वहां पे एक्टिविटीज करा सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है बैकलेस डेज। तो ये पहला हो गया आपका मिडिल स्टेज में, फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू वोकेशनल स्किल्स required for performing occupations, giving opportunities for students to get hands-on experience or personal interaction with local technicians or skilled artisans or craftspersons. Then हब एंड स्पोक मॉडल की बात कही गई है, जिसमें हम बात करते हैं कि एक क्लस्टर होगा। अब क्लस्टर में जैसे आपके पास मान लीजिए कि 10 स्कूल्स हैं, आप मान लीजिए EMRS है, और उसके बीच में कहीं आसपास में ITI है या पॉलिटेक्निक है या कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आप बच्चों को ट्रेनिंग के लिए ले जा सकते हैं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल की बात कही गई है। इसमें रिसोर्सेज को कैसे हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करें, बजाय कि हम एक स्किल लैब अपने स्कूल में सेटअप करें जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, पैसा चाहिए बहुत, ये सारी चीजें हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आप वहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री या कोई पॉलिटेक्निक देखिए जिसमें आप कहें कि भाई यहाँ पे जो है हम अपने बच्चों को लेके आएंगे और आपके यहाँ इनको सिखाएंगे, बच्चों को हम ट्रेनिंग कराएंगे। तो थ्योरी जो है वो आप अपने यहाँ करिए और प्रैक्टिकल जो है उस इंस्टीट्यूशन में ले जाके कर सकते हैं। तो ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पे आपके आसपास कोई इंडस्ट्री या ITI है। जहाँ नहीं है वहाँ आपको लैब सेटअप करनी पड़ेगी अपने, जैसे रिटेल की लैब है, ऑटोमोटिव की लैब है ना, और भी जो भी ब्यूटी एंड वेलनेस की लैब है या इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है। ये आपके जैसे अटल, आपको पता होगा अटल टिंकरिंग लैब्स जो है,
वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है आपको सेटअप करना होगा। तो टेक अवेज क्या है? अर्ली वोकेशनल एक्सपोजर, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद एकेडमिक एजुकेशन, flexibility in course offering, focus on hands-on learning, setting up skill labs and collaboration with industry। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक के एक वीडियो दिखाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे जो और देशों में साउथ को, जैसे फॉर एग्जांपल, किस तरह से जो है चलाया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन को। ये वीडियो दिख रहा है आपको? Can you see the video? I think there's some problem with
showing that video. है? अच्छा शेयर हुई थी? अच्छा एक मिनट फिर से। पीपीटी को हटा दे। स्क्रीन से कर, स्क्रीन और एप्लीकेशन में। ये अभी स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिखा रहा है? वीडियो नहीं दिखा रहा? नहीं दिखा रहा ना वीडियो? नहीं वीडियो दिख रहा था। गुड मॉर्निंग। मैंने ये बटरफ्लाई ड्रेस पहनी है। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है ना? नहीं दिख रही। गुड मॉर्निंग। मैंने ये बटरफ्लाई ड्रेस पहनी है। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है ना? हेलो ये भाई की हाँ, ड्रेस हाँ। देखो। ये कैसे किया ये आपने? कैसे? उसी पे चला दिया? मतलब पहले वीडियो चला दें हम, उसके बाद शेयर स्क्रीन करें। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। मैंने ये बटरफ्लाई ड्रेस पहनी है। ठीक मैं है, हम कैसी करके लग रही देखते हूँ? हैं। अच्छी लग दिख रही है अपना? ठीक।
Hello. Okay. So we'll continue with the presentation now. So the National Education Policy 2020 recognizes the unique challenges that the tribal people face in quality education and seeks to address their specific needs and aspirations. NEP 2020 emphasizes the importance of inclusive education, and it specifically addresses the educational needs of socially and economically disadvantaged groups, including tribal communities. So NEP also specifically mentions the strengthening of EMRS to provide high quality education to tribal children. Vocational education can be integrated with this goal by incorporating additional skills and knowledge unique to tribal communities into the vocational curriculum. Providing vocational skills can empower tribal students by giving them the tools that they need to be self-reliant and economically independent. So what we have to aim is to strengthen the EMRS by providing high quality education and vocational education so that we can empower our students. Now, if we look at the dropout of tribal students, so nearly half of the total children enrolled in schools in tribal areas, they are dropping out. So 48.2% as per the, if we look at before they complete grade 8, with more boys leaving the education midway according to the Tribal Development Report 2022 of Bharat Rural Livelihoods Foundation, which is an independent body of the Union Cabinet under the Ministry of Rural Development. And the dropout rate, especially in elementary classes in tribal areas of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Odisha, are much higher than in other communities. And for those who do not enter secondary education at the end of grade 10, 63.2% male students and 61.4% of female students, they are dropping out. So there's a serious concern about the dropouts of the tribal students, and we have to bring in alternative schooling methods like open schooling, for example. You might be all aware about the National Institute of Open School, which is also offering vocational courses through a distance mode. So we have to also promote open schooling. We have to promote vocational education through contact programs, through digital resources. So all these things, I'll be also talking about haptic devices that we can use for training our students later on in this presentation. Now, when we talk of vocational education for tribal communities, we all know that these are often located in rural or remote areas with limited access to educational and economic opportunities. Therefore, the programs are to be designed to incorporate and preserve traditional tribal skills and crafts. This not only helps in passing down cultural heritage, but also provides opportunities for tribal students to engage in economic activities based on their unique cultural expertise. Tribal communities, as we know, we have been doing some work in vocational education for them. The Ministry of Tribal Affairs supports the proposal for the construction of vocational training centers received from the state governments through grants under Article 275(1) of the Constitution. And the scheme of special central assistance to tribal sub-scheme. These centers are managed by the concerned state governments. So, and being part of the Eklavya model residential schools, you all know that this is an important step towards reducing the educational gap between tribal communities and rest of the population.
EMRS can include vocational education as part of their general education curriculum or alongside regular academic subjects. So they can be a two-pronged approach. One could be like, integrating vocational activities in your general education subjects, where you organize vocational activities to develop the vocational capacities of the children. The other approach will be like offering a vocational subject along with the general education subject. So this will actually provide a balance between theoretical knowledge and hands-on practical training. Then vocational education can empower tribal students to become entrepreneurs. Now here the focus is developing entrepreneurial skills so that by imparting business skills along with the vocational training, students can establish and manage their own businesses, contributing to economic development in tribal regions. By offering vocational education, society can promote social inclusion by students have equal to opportunities for skill development and employment, thereby reducing disparities and promoting a more inclusive society. Then what would be the role of principals in implementation of vocational education in EMRS? They have to develop a clear vision for integrating vocational education within the overall educational framework of the school. They need to provide information on resources and tools available for teaching vocational education. Communicate the importance of vocational education to staff, students, parents, and the community, and ensure that vocational courses align with the overall goals and standards of the school. They also have to look into the industries which are around and accordingly allocate resources, including funds and facilities to support the implementation of vocational education programs. They need to collaborate with relevant organizations to secure additional resources and partnerships with vocational training institutions or industries. They have to foster a culture of continuous professional development to keep teachers updated on the latest trends and practices in vocational education. They also have to collect and analyze data to assess the impact of vocational education on students' academic performance, skills development, and career readiness. They have to facilitate exposure visits, that is your field visits to industries, to organizations, like for example, in healthcare, to hospitals. In retail, they have to take the students to retail malls. In agriculture, they have to take them to agricultural farms. So those kinds of visits will help students to understand the various tasks that are being performed by the people who are occupied in that area. They will also learn the various competencies which the people who are working there, those competencies are to be acquired by them if they want to get into that discipline or sector or area. So exposure visits are very important. So you should organize at least 3 to 4 field visits in a year for the students to expose them to the variety of tasks and occupations in the world of work. Internship programs. So short duration uh, visits and also hands-on activities can be organized in the field so that students they get exposure of the various tasks. Apprenticeship training, about this, there's an Apprentices Act 1961 which was amended in 2014 to include the optional trades. Optional trades are the trades which are being implemented in the schools and ITIs. So they have also now included these trades optional trades so that students after 14 years can go for apprenticeship training. So it's a 1 year training program where students also get stipend. This stipend is like 50% being given by the government, 50% is borne by the industry or the organization which is providing apprenticeship training. So the students, they get practical insights into the various vocational fields during this apprenticeship training.
The teachers, now, what would be the role of teachers in shaping the vocational learning experience? They have to offer guidance and counseling to help students explore and choose vocational paths aligned with their interests, strengths, and career aspirations. They have to share information about potential career opportunities and the evolving demands of the job market. They have to use diverse and engaging teaching methods that cater to various learning styles, including hands-on activities, projects, and real-world applications. The teachers have to foster a positive and inclusive learning environment that encourages student participation and collaboration. Focus on the development of practical skills that are directly applicable to the chosen vocational field. They have to provide opportunities for students to apply theoretical knowledge in real-world situations through simulations, projects, and internships. They need to use a variety of assessment methods, including project-based assessments and skills demonstrations, to evaluate vocational learning outcomes. Now, once we say learning outcomes, now what has been the problem with our education system so far? We have always focused on the learning objectives rather than the learning outcomes. So as a result, the teacher, when they are teaching, they are not sure of what the student has learned. Now, in order to reinforce this, I'll tell you this story. एक बार राम और श्याम मिले कोविड के बाद, तो राम से श्याम ने पूछा कि भाई कोविड में क्या करा? उसने कहा मैंने वीडियोस बनाया, मैंने कुकिंग सीखी, मैंने गार्डनिंग सीखी, और उसने कहा मैंने अपने टॉमी को, जो कुत्ता है उसके साथ खड़ा था वहीं पे, मैंने टॉमी को जो है वो सीटी बजाना सिखा दिया। उसने कहा अरे सीटी बजाना सिखा दिए तो कमाल की बात होगी। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम पूछ लो टॉमी से। तो उसने टॉमी से कहा भाई सीटी बजाओ। टॉमी कहाँ सीटी बजाता, उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो उसने कहा ये तो भौंक रहा है, ये तो सीटी तो बजा नहीं रहा है। उसने कहा कि तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैंने उसको सीटी बजाना सिखा दिया। मैंने कब कहा उसने सीख लिया? So this is the basic problem with our education system. We always say, I have taught children, I have covered the syllabus, I have done my job, I have taken the period. मैंने जो है अपनी कक्षा में गई थी और मैंने पढ़ा के चली आई, मैंने सिलेबस कवर कर दिया, मैंने इतने पीरियड्स ले लिए, मैंने ये कर दिया. So what we are saying is always मैंने क्या किया. हम ये नहीं कहते कभी भी कि हमारे बच्चों ने ये सीख लिया, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, हमारे बच्चों ने ये इतना ये सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लिया, वो एक पैराग्राफ अपने से खुद से लिख सकते हैं. इस तरह के स्टेटमेंट्स हम नहीं देते एज टीचर्स. सो देयर हैज टू बी a change from input based education to outcome based education. तो हमें क्या करना है? हमें लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करना है. दैट मीन्स व्हाट अ लर्नर इज एबल टू नो एंड डू, दोनों चीजों पे ध्यान देता है. क्या वो जानता है और क्या वो कर सकता है. मतलब जिस चीज को वो जाने उसको करके दिखाए, तब हम समझेंगे कि हाँ हमारा बच्चा सीख गया. सो दिस काइंड ऑफ change we have to bring using a variety of teaching learning methods, assessment methods, जैसे कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट है, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन है, आउटकम्स बेस्ड लर्निंग है. इन सब के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. Then we have to showcase success stories of students who have excelled in vocational education to promote a positive perception of these programs. ये सारी चीजें हमें करनी है एज अ टीचर. नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा जो करिकुलम बनता है, जो भी हम नेशनल लेवल पे करिकुलम या स्टेट लेवल पे हमें करिकुलम या सीबीएसई का करिकुलम हमें मिलता है, हमें उसको टेलर करना है. उसको टेलर इसलिए करने की जरूरत है कस्टमाइजेशन. हमें ये ध्यान रखना होगा कि आप ट्राइबल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जिनके पास जो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, जिस तरह की जो न्यूमरेसी स्किल्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स है, वो और बच्चों के मुकाबले उतनी नहीं है क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिला उस तरह का. तो हमें अपने करिकुलम को, हमारे जो लेसन प्लान है, हमारे पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है, हमारा एसेस करने का तरीका है, इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा. हमें टेलर करना पड़ेगा उसको टू कस्टमाइज टू द नीड्स ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें
लाइफ स्किल्स को इंक्लूड करना है, जिससे कि बच्चा जो है वो स्किल सीख सके। जैसे आप बेसिक लिविंग स्किल्स हो गई, बेसिक कोपिंग विद स्ट्रेस, आपका लैंग्वेज स्किल्स है, ये सारी चीजें वो सीख ले। और उसके बाद वो स्पेसिफिक चैलेंजेस जो उसके सामने आते हैं, जैसे कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हम सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा रहे हैं, तो किस तरह से हम सिखाएं, कैसे हम टेलर करें अपने टीचिंग को कि ये बेसिक स्किल्स उसको जो है आ जाए। तो इसीलिए टेलरिंग करिकुलम टू द नीड्स ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो वी हैव टू इन्फ्यूज द करिकुलम with content that reflects the cultural heritage, history and traditions of the tribal community. कैसे वो सीख रहे हैं, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, वो कैसे स्किल डेवलप करते हैं, और उसी को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए उसको आप मॉडर्न तरीके से सिखाने के और भी जो तरीके हैं उन पे लेके आइए। तो शुरुआत वहां से करिए जहाँ पे वो सीख रहा है, या जो चीजें, जैसे कारपेंटर होता है वो जिस तरह से हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं या जो हम फॉलो करते हैं टेक्निक्स, वो नहीं करता वो अपने हिसाब से, क्योंकि उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या इनफॉर्मल मेथड से सीखा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक हिम और हर टू अ सिस्टम वेयर हम उसको फॉर्मली जो है ट्रेन कर सकें। तो पहले हमें इनफॉर्मल ट्रेनिंग से शुरू करते हुए उसको फॉर्मल ट्रेनिंग पे लेके आना होगा। उसके परिवेश में जो हम जिस वो एनवायरनमेंट में पला है, जिस तरह से वो सीख रहा था, उसको पहले ध्यान में रखते हुए then we bring him or her to that kind of training. So align the curriculum with the local environment. आस पास जो रिसोर्सेज है जिससे वो सीख रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना है। इकोनॉमी, इकोलॉजी, जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमें लेके आना है उस चीज़ों को अपने टीचिंग में। Incorporate local languages, folklore and traditional knowledge into the curriculum to make learning more relatable and meaningful for students. देन हमें क्या करना है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है बच्चों को कि उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन और सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, इसको हम ध्यान दे रहे हैं कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनकी न्यूट्रिशन पे, उनकी हेल्थ के, तो ये सारे हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करिए, उनको डाइट प्लान उनका दीजिए, उनको बताइए कि क्या क्या खाना जरूरी है उनके, जिससे कि उनका दिमाग अच्छे से चले, उनका शरीर बेहतर तरीके से चले। तो ये सारे जैसे मिड डे मील जो इंट्रोड्यूस किया गया कि न्यूट्रिशन हमें बच्चों को देना, तो उसी तरह आप अपने यहाँ गार्डनिंग के द्वारा जो है वेजिटेबल गार्डन्स यू कैन स्टार्ट। यहाँ पे आप सब्जी उगाइए, उसको आप मिड डे मील में भी यूज कर सकते हैं। ताजी सब्जी बच्चों को खाने को मिलेगी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाने को मिलेगी। तो ये एक्टिविटीज आप कराइए बच्चों को, उसी के थ्रू साइंस सिखाइए। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये प्रोटोजोन, ये सब चीजें आप उसको उसी दौरान सिखा सकते हैं। तो साइंस भी पढ़ाएंगे, एक्टिविटीज भी कराएंगे, और बच्चे की लर्निंग भी बेहतर होगी, क्योंकि वो ये जान पाएगा कि जो मैं ये साइंस में पढ़ रहा हूँ या सोशल साइंस में पढ़ रहा हूँ या आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, ये हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो एंगेज देम इनटू दीज एक्टिविटीज। अब सवाल ये आता है कि एक अकेला टीचर क्या सब कुछ करेगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है उसको? उसको ट्राइबल एल्डर्स है, कम्युनिटी लीडर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं। जैसे कोई किसी के पेरेंट फार्मर हो सकते हैं, किसी के पॉटरी मेकर, किसी का हेयर ड्रेसर हो सकता है, किसी के कुछ है, तो उनको आप, कारपेंटर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, ऐसे काम कर रहे हैं, उनको आप इनवाइट करिए अपने स्कूलों में और उनसे जो है एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराइए। छोटी छोटी एक्टिविटीज, जैसे नल खराब हो गया उसको हमें कैसे ठीक करना है, पानी गिर रहा है उसका, हमें बिजली का सॉकेट खराब हो गया उसको कैसे रिप्लेस करना है, अगर स्विच खराब हो गया उसको कैसे रिप्लेस करना है, घड़ी में बैटरी डाउन हो गई है तो उसको हमें कैसे रिप्लेस करना है बैटरी। छोटी छोटी एक्टिविटीज, बॉटल को कैसे हम यूज कर सकते हैं गार्डनिंग के पर्पज से, इस तरह की आप छोटी छोटी एक्टिविटीज उनसे बच्चों से कराइए, तो उनका एक रुचि भी डेवलप होगी, उनको जिज्ञासा भी होगी नई चीजें, और उसके साथ फिर एक्सपेरिमेंट्स करवाइए आप। जैसे 5-6 बॉटल में पौधे लगा दिए, उसमें थोड़े थोड़ा फर्टिलाइजर डाला, यूरिया है, जैसे पोटाश है,
है ना, उस तरह के फास्फोरस के लिए, तो वो सब डाल रहे हैं, तो उससे क्या चेंजेस देखे आपने, पत्तियां हरी हुई कि पीली हो रही हैं कि क्या हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज, तो एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे बच्चे। Integrate examples and case studies that resonate with the students' living experiences and surroundings. तो क्या होगा कि उनके आसपास के परिवेश में जो भी चीजें, जो गतिविधियां हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे बहुत कुछ है वो बच्चे सीख सकते हैं। So we have to also take into consideration the learning styles. जब हम learning styles की बात करते हैं तो वार्क सिस्टम एक डेवलप किया था फ्लेमिंग ने, जिसमें विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक। तो सबसे ज्यादा बच्चा जो है सीखता कैसे, करने से। काइनेस्थेटिक डोमेन की जब हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक्शन इन्वॉल्व है, वहां पे बच्चा जल्दी सीखेगा। तो हमें एक्टिविटीज के थ्रू अगर हम ज्यादातर बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीखेंगे, बजाय कि आप सिर्फ उनको ज्ञान दे रहे हैं। Place a strong emphasis on practical and vocational education to equip tribal students with hands-on skills relevant to their local context. अब आपको शायद इसके बारे में जानकारी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज इनिशिएटेड अ न्यू स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव विदिन द आजीविका स्किल्स प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट स्कीम कॉल्ड रोशनी for youth from 27 most critical left-wing extremist affected district. तो 27 LWE डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने ये स्कीम जो है चलाई है, जैसे वो रोशनी के नाम से बुलाते हैं। और इसमें ये ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी जो LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो ट्राइबल यूथ है, उनको जो है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। Students with vocational certification in business, construction, trades, computers, or health often are sought after for positions in tribal departments, programs, and services. जैसा मैं कह रहा था पहले भी कि हैप्टिक टेक्नोलॉजी जो है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट कैन क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ टच बाय अप्लाइंग फोर्सेस, वाइब्रेशंस और मोशंस टू द यूजर। तो कई बार ये बात आती है कि कैसे हम सिखाएंगे, हाथ कट जाएगा, या थोड़ा सा डर है उसमें चलाने में, या जो करने में आदमी हिचकता है कि हम इसको करें कि नहीं करें, सेफ्टी इश्यूज है। तो ये हैप्टिक डिवाइसेस जो है, जैसे आप अगर इसके ऊपर आप देख रहे हैं इस फोटो में कि वो कंप्यूटर पे दिख रहा है, यहाँ पे जो है वो ऐसे ही कर रहे हैं, सिमुलेशन कंडीशंस में कर रहे हैं, सिमुलेटेड कंडीशन के द्वारा वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और वहां कंप्यूटर में दिख रहा है कि उसका कैसे कटेगा वो चीज। अगर कोई काटना है आपको मेटल, एक्चुअली में नहीं काट रहे, बट आपको कंप्यूटर में दिखेगा कितना कट गया, और डेप्थ में काटना है, कितने सेंटीमीटर और जाना है इसके। तो ये सारी चीजें आती, इस तरह की डिवाइसेस आजकल आ गई हैं जो सिमुलेटर, जैसे ड्राइविंग है, पायलट जो बनाते हैं जो हम लोग, वो सिमुलेटर में पहले वो करते हैं, उसके बाद जो है एक्चुअल एरोप्लेन में वो उड़ाने जाते हैं। उसी तरह कार ड्राइविंग में भी जो सिमुलेटर यूज होता है, कार ड्राइविंग सिमुलेटर को पे पहले बैठाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके बाद जो है वो एक्चुअल रोड पे जाते हैं, गाड़ी में बैठ के सीखते हैं। तो इसी तरह जो है मोबाइल वोकेशनल एजुकेशन का प्रोजेक्ट जो है, ये माची लैब्स और अमृता यूनिवर्सिटी ने किया है इसमें, और ये काफी सक्सेसफुल भी हुआ है बहुत सी जगह। ये आईसीटी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको लेके हुआ है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आसाम के एक म्यूजियम से ली थी हमने। ये शो करता है कि किस तरह के ऑक्यूपेशंस जो है वो ट्राइबल एरियाज में पॉपुलर हो सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, आप लोग इस वेबसाइट पे जरूर जाएं। बहुत रिसोर्सेज है इसमें। हमारा एक जर्नल भी निकलता है, इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हमारा एक एनुअल बुलेटिन निकलता है। ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे दिखाई देंगी। हमारे जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हम लोगों ने ग्रेड 6 to 8 के लिए, 9, 10th, 11th, 12th के लिए ये सब जो वीडियोस बनाए, ये सारे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान या PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ आप ये सारे रिसोर्सेज, करिकुलम हम लोग ने अपलोड किए हुए, किताबें डाल रखी हैं,
पीपीटीज डाल रखे हैं, फ्लिप बुक्स हैं, बहुत सा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, और जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने 9 से 12 के लिए, ग्रेड 9 to 12 के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की किताबें बनाई हैं, जिसमें 5 कंपोनेंट आप देखेंगे। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है आईसीटी स्किल्स, तीसरा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और पांचवा है ग्रीन स्किल्स। तो ये सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रिलेटेड जो किताबें हम लोग ने काफी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके, इसमें वाधवानी फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी काफी हम लोग की मदद करी थी इन किताबों को। ई लर्निंग मटेरियल, आपको इससे रिलेटेड ई लर्निंग मटेरियल भी मिलेगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा वाधवानी फाउंडेशन का, जिसमें आप जाके वहाँ पे बहुत सा वीडियोस और ई लर्निंग मटेरियल रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देख सकेंगे। ये देखिए, अब जो एआई का जमाना आ गया, जैसे हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हमने जो है एक करेक्टर लिया था, और इसको अभी यहाँ से चल नहीं रहा है, कुछ इशू है इसमें, क्योंकि अपलोड किया है। तो इसमें ये करेक्टर लेके हमने जो टेक्स्ट डालते हैं, तो इसमें 3 ऐप यूज करते हुए हमने इसको बोलना, मतलब ये बोलने लगेगा, और उसके बाद ये बताएगा सब कि क्या इसने, मतलब इसको लेक्चर सेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना है, करेक्टर लेना है, और इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो टेक्नोलॉजी देखिए कितनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप किसी भी एक करेक्टर को लेके अपना टेक्स्ट डाल के आप इसमें कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस बना सकते हैं छोटे छोटे लेक्चर सेशन के, बिना कैमरे के, बिना किसी रिसोर्स के। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी डिजिटल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास लैंड बेस्ड रिसोर्सेज है या एग्रीकल्चर बेस्ड रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास जो स्कूल के आसपास, उनको हम इस्तेमाल करके बच्चों को इनोवेटिव तरीके से, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अगर हमारे पास ये मंशा है, हमारी विल है, हमारे, कहावत है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और दूसरी कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हमने प्रैक्टिस कराई बच्चों को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी वो सीखेंगे, उतना अच्छा सीखेंगे, और वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों में सिर्फ ज्ञान ना दें, हम उनको स्किल्स भी दें, और उनके अंदर वैल्यूज, एटीट्यूड, बहुत अच्छा व्यवहार, बेहतर बिहेवियर, ये सारी चीजें हम डेवलप करें, तभी हम जो है शिक्षा को उस तरह से बना पाएंगे जैसे हम देना चाहते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, और उसको इस तरह से देना है कि जो बच्चे को ये ना लगे कि ये मुझे मीनियल जॉब्स करने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको हमें अट्रैक्टिव बनाना है, उसको हमें जिसे कहते हैं ना कि अ, ये किसी का माइक ऑन हो रहा है। रानी, हाँ, तो हमें उसको अट्रैक्टिव बनाना है, और जिससे कि जो है बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और उसमें व्यावसायिक शिक्षा द्वारा जो है वो स्किल्स एक्वायर करें। तो अब मैं यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, और कुछ सवाल हम लोग यहाँ पे लेते हैं आप लोगों से, जिससे कि ये पता लगे कि आपने कितना आपने सीखा, फीडबैक भी दीजिए आप सेशन का। और ये कुछ सवाल अगर आपके मन में आए हैं, या आपको लगता है कि मैं व्यावसायिक शिक्षा चलाना चाहता हूँ अपने स्कूलों में, और मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है? Teachers, please ask something if you want to.
Sir, I think they have no question. सुनीता हाँ कुमारी जी ने रेज किया है। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मेरा एक चाहत है कि मेरे बच्चे को मैं सोप बनाना सिखाऊंगी और फिनाइल और डिटर्जेंट पाउडर बनाना सिखाऊंगी, तो मैं ट्रेनर कहाँ से पाऊंगी? हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। एक तरीका ये है कि आजकल वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि कैसे फिनाइल बनाना है, कैसे सोप बनाना है। इवन जो वेस्ट सोप है, हमने भी कई वीडियोस ये देखे हैं और घर में भी ट्राई किया है। इसमें एलोवेरा का पौधा लेके आप उसको उसका जेल निकाल के आप बहुत अच्छे जो वेस्ट सोप होते हैं उसको पिघला के और कैसे आप बना सकते हैं, इसमें एलोवेरा डाल के बहुत अच्छा सोप बन सकता है। तो वीडियोस आप देखिए, आप भी उसमें रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं वीडियोस देख के, क्योंकि ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, आपको लगानी है टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो है आपको यूज करनी है। चाहिए कि आपको कुछ बर्तन चाहिए होंगे, जैसे एलोवेरा के जेल का आप बॉटल भी ला सकते हैं, या आप अगर पौधा आपने लगाया हुआ है अपने स्कूलों में। इसीलिए हमने कहा कि आप गार्डनिंग, रानी जी का माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, गार्डनिंग करनी है। जैसे एलोवेरा के पौधे लगवा दीजिए बच्चों से ढेर सारे, तो आपको रिसोर्सेज वहां से मिलेंगे। क्योंकि अगर आप सब चीजें खरीद के लाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। और इससे बच्चा ये भी सीखेगा कि हमें, जैसे एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम वहाँ खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, लेकिन खाद कहाँ से आएगी? जब तक कि आप गाय भैंसे नहीं पालते तो गोबर कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीजें, काउ डंग आपको कहाँ से मिलेगा जब तक कि आप एनिमल हस्बेंड्री नहीं वहां पे करते? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बच्चों में ये रियलाइज कराना है कि आपको रिसोर्सेज जनरेट करने होते हैं, तब आप उसका प्रोडक्ट बनाते हैं और तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। जैसे आपने कैंडल मेकिंग सिखाया, तो वैक्स आप खरीद रहे हैं, बहुत कॉस्टली पड़ रही है, तो कैसे हम जो है बी वैक्स कैसे तैयार कर सकते हैं? हम वैक्स को कैसे हम कुछ चीजें उसमें ऐसी डालें जिससे कि वैक्स की यूज कम हो और कैंडल तैयार हो जाए, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे वो। जैसे हो सकता है वो उसमें कोकोनट फाइबर ले ले और उसका बुरादा बना के उसमें वैक्स के साथ मिक्स करके कैंडल तैयार करें। तो वैक्स कम यूज होगी, कोकोनट फाइबर ज्यादा यूज होगा। उससे क्या होगा कि आपकी बचत होगी वैक्स की और आपकी कैंडल सस्ती बनेगी। इसी तरह पेपर मैशी का जो है काम कराएं हम बच्चों को। तो हम वेस्ट पेपर को, जो हमारे यहाँ रद्दी निकलती है, जैसे लाइब्रेरी में बहुत सा न्यूज़पेपर वेस्ट निकलता है, तो हम उसको लेके पेपर मैशी के टॉयज बनवाएं या गमले बनवा दें। इस तरह की चीज, अब गमले बनाए तो गल जाए, खराब हो जाएगा। तो चैलेंज क्या है कि अंदर प्लास्टिक कैसे हम उसको वो करें, जिससे कि अंदर प्लास्टिक रहे और बाहर जो है वो पेपर मैशी का प्रोडक्ट दिखे। यही इनोवेटिवनेस तब आएगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड्स ये तैयार करें बच्चों में। और वो तब होगा जब हम एक्टिविटीज कराएं, हम उनको चैलेंजेस दें। जैसे आपको हमने चैलेंज दिया कि भाई आप क्या, आप कर सकते हो, तो आपने कहा कि हम कैसे करें, तो हमने कहा वीडियो। तो चलो भाई वीडियो देखते हैं, पहले देखते हैं कैसे बनता है, उसके बाद किसी से मदद लेंगे अगर जरूरत पड़ी। नहीं बना ठीक से, हो सकता है कि बने ही ना ठीक से, भाई वीडियो में जैसा दिखा है। आपको एक मजेदार बात बताएं कि अभी हम वीडियो देख रहे थे किसी का, वो क्या कर रहा है, वो दूसरों के वीडियो देखता है और उसको फिर ट्राई आउट करके देखता है। जैसे उसने क्या किया कि किसी ने दिखाया वीडियो में कि अगर आपकी चाबी अंदर गाड़ी की बंद हो जाती है कार में, तो आप कैसे उसको शीशे को खोलोगे, विंडो जो है आपकी फ्रंट विंडो कैसे खोलोगे? तो उसमें टेप को, सेलो टेप को यूज करते हुए, अब उसको टेप को किस तरह से लगाना है पूरा उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, और कैसे फिर शीशे को टेप के सहारे खींचते खींचते नीचे लाया और हाथ डाल के चाबी निकाली। इसी तरह बैटरी डाउन हो जाती है सर्दियों में, जैसे अगर किसी की कहीं पे,
कार की, तो वो कैसे टायर जैक पे लगा के उसको टायर से रस्सी बांध के प्लास्टिक की और जोर से खींचेगा तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीजें हम लोग को पता ही नहीं है। अब इसके पीछे साइंस भी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। अगर हम बच्चों को इस तरह से एक्टिविटीज करके उनको साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे इनोवेटिव माइंड्स तैयार होंगे, रादर देन रोट लर्निंग जिसे कहते हैं रट्टाफिकेशन। रट रट के आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाके कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? एम्प्लॉयर को ऐसा बच्चा चाहिए या ऐसा यूथ चाहिए जो इनिशिएटिव ले काम करने के। आपने कहा ये करके दिखाओ, हाँ सर करके दिखाते हैं हम, आई कैन डू इट। तो वो उसमें लग जाए प्रोजेक्ट में और उसके बाद उसमें आउटपुट दे। इंडस्ट्री को भी वही चाहिए कि अगर हम 1 करोड़ लगा रहे हैं आपके ऊपर तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें 2 करोड़ 3 करोड़ कमा के दे पाओगे कि नहीं। तो उनका सोचना ऐसा रहता है। और हम क्या सोचते हैं, हमने तो पढ़ा दिया भाई बच्चे को, अब वो उसकी किस्मत, नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो हम किस्मत पे नहीं छोड़े, उसकी किस्मत पे क्यों छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसा तैयार है कि एम्प्लॉयर खुद कहे कि भाई कल से आओ, मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए, वी वांट पीपल लाइक यू, कम टुमारो एंड जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे होने चाहिए। यहाँ लोग आते हैं रेज्यूमे ले लेके, सर नौकरी दे दो, सर नौकरी, तो पूछो क्या आता है, सर अभी सीख लेंगे। यहाँ पे सिखाने के लिए थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री सिखाने के लिए नहीं होती। सिखाने के लिए हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, पॉलिटेक्निक्स है, दे हैव टू डू दैट जॉब। इफ दे आर नॉट डूइंग दैट जॉब देन व्हाट विल हैपन? अनएम्प्लॉयड यूथ, वो हम तैयार कर करके बाहर भेज रहे हैं। और उनकी परेशानी ये, वो किसको कहें, किसको रोए जाके कि भाई हमारा तो भविष्य खराब कर दिया। दैट इज व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। और किसी का कोई सवाल? हाँ लेखा जी, चित्रलेखा, हाँ बताइए। चित्रलेखा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए माइक को। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ या गुड इवनिंग, प्लीज टेल मी। सर, जैसे आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हम एनकरेज करें बच्चे। मैं हिमाचल से हूँ और हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं या फिर वो जिसमें स्किल हो सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट है। लेकिन हमारे बच्चों का वो इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है और उसके बाद बहुत महंगी चीजें ये है। और इनको दिख रहा है कि इसमें जब मतलब पैसा मिलेगा तो काफी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो इसमें मेहनत ज्यादा है और इनको इनकम कम होगी। तो हम कैसे उनका इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप करें? तो देखिए, आपको 2 चीजों पे काम करना होगा। पहला तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, वी हैव टू मूव अ स्टेप, देन ओनली थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। जो इनर्शिया स्टेज में रहते हैं ना हम लोग, उससे हमें बाहर आना होगा। तो आपको चाहे छोटे से ही रिसोर्सेज, जो भी आपके पास आसपास रिसोर्सेज है, उससे डेवलप करना होगा चीजों को। दूसरा, उसको मार्केटेबल बनाना होगा। जैसे अगर आप उदाहरण दें कि जैसे हमने स्वेटर बुनना सिखाया, स्वेटर ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई उसको खरीदेगा नहीं। जैसे हमने शर्ट बनाना सिखाया, अगर शर्ट का डिजाइन अच्छा नहीं है तो कोई खरीदेगा नहीं उसको। तो हमें क्या करना है, बच्चों को पहले ये बताना है कि हम रिसोर्सेस कहाँ से लाएं, उसको मिनिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस कैसे करें, जिससे कि अगर वो कम पैसे में, ये फैक्ट्रीज ने यही किया। आप देखिए नाउ, अभी आप प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन बल्क। कपड़े की अगर हम बात करें, शर्ट्स की, तो रेंज है 200 से लेके 5000 तक की जो है शर्ट आ रही है। और उसमें इतना 200 वाला भी मार्जिन कमा रहा है, मतलब उसके पास भी पैसा आ रहा है, और 5000 वाला तो बहुत ज्यादा कमा ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मिनिमाइजेशन ऑन कॉस्ट, ये बच्चों को पहले सिखाना होगा। रिसोर्सेज को कहाँ से लाए, मार्केटिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी।
आप देखिए एक सब्जी वाली होती है, वो सब्जी लेके आती है अपने वहां पे दुकान पे, और वो क्या करती है, कैसे सब्जी लेके आती है, कैसे डिसाइड करती है कितनी सब्जी आज मुझे कौन सी सब्जी लेके जानी है, किस क्वांटिटी में लेके जानी है, कहाँ पे हमें ठेला लगाना है या आपकी दुकान लगानी है। ये सारी चीजें मार्केटिंग स्किल्स का पार्ट है। आप अगर ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे लोग ज्यादा आई जाए नहीं रहे हैं, तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटी तो अवेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ऐसी जगह पे आपने दुकान खोल ली जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है नहीं। आप इसीलिए देखिए हॉस्पिटल्स के आसपास सारी फार्मेसी शॉप्स आपको ज्यादातर मिलेंगी। क्यों मिलती हैं? क्योंकि पता है उनको वहां से मंदिर के पास फूल वाले, प्रसाद वाले, ये सब आपको वहां ढेरों मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जो जाएगा अंदर वो प्रसाद लेके जाएगा, फूल माला लेके जाएगा, वो वहां बैठते। जो दूर बैठेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको एक आध लोग आ गए अगर कि भाई हो सकता है यहाँ सस्ता मिलेगा तो वो ले लेगा। तो ये चीजें हमें बच्चों में डेवलप करनी है, ये बातें उनके अंदर हमें इनग्रेन करनी है कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको पैसा कमाना है, मार्जिन रखना है, तो आपको ये सारे स्किल्स डेवलप करने हैं। उसके साथ सेविंग। आप देखिए आज के यूथ ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग पे ध्यान नहीं देते। वो जितना आता है उसको पहले खर्च कर लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा वेस्टर्न कल्चर भी वहां पे ज्यादातर कंट्रीज में रहा है कि सेविंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते वो अपना। तो सेविंग भी बहुत जरूरी है, हमें ये भी सिखाना पड़ेगा बच्चों को। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। इस तरह की चीजें भी हमें लेके आनी है जिससे कि वो आगे चल के अपना भविष्य बेहतर बना सके। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। We still have 10 minutes. Teachers, sir can take a few more questions if you have. हाँ, सुनीता कुमारी जी। मैं आपको एक दो वीडियो और दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये भी पता लगेगा कि कैसे जानवरों तक को जो है इतना बढ़िया ट्रेन किया जाता है। आई होप ये आपको विजिबल हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा। हेलो। हेलो। हाँ क्या हम आपके कांटेक्ट नंबर ले सकते सर? हाँ हाँ, हम बता देते हैं। ओके सर। या 94 यस सर। 244 यस सर। 858 यस सर। 21। थैंक यू सो मच सर। I think there's some problem with this video sharing. आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए।
Sir, I think it's time to call it a day now. Yeah. So, may I, sir, close it now, if you allow? Yeah, please. Yeah, we can. Okay, good evening, everyone. I, Gitanjali Bhushan, on the behalf of the NESTs, principals from different EMRSs, and teachers, extend my heartfelt welcome and gratitude to today's resource person, Mr. Vinay Swaroop Mehrotra. It has been an honor to be a part of this session. And sir, it was really an informative, insightful, and engaging session. And I'm sure the teachers will certainly learn from your example of Mahabharat. Then the example of Tommy calls for introspection among teachers. So yes, thank you so much again, sir, for sharing your extensive knowledge on how vocational education can be integrated with academic education. So yes, thank you so much, sir. Thank you very much. Thank Namaskar. you. Right, sir. Thank you, sir. So teachers, let's call it a day. You may leave, please.